tariff and price signaling. So I hope the slides are visible, Zainab. Yes, they're visible. Okay, I mean the full whole screen. Yes, the full screen is visible. Okay. So the document's the title is Understanding Electric Power System and Tariff Structure. I would say it is more focused on tariff structure in Pakistan, and it is a basic guide targeted for the general public consumers. Uh, this is what the overview looks like in Pakistan. We have multiple categories of tariff when it comes to electricity sector. A1 is the residential consumers, A2 are commercial consumers, A3 includes general services, and the B category, they are industrial consumers, B1 up to 25 kilowatts, B2 is up to 25 to 500 kilowatts, and B3 category, it is around 500 kilowatts to 5 megawatts consumers, the industrial consumers, and B4 includes greater than 5 megawatts consumers. And then C category is the bulk supply, and D is agriculture. Other than these categories, there are some other categories as well, but the ratio is very minute. And if you see the consumers and consumption ratio, you'll see that the A1 category, that is the residential consumers, they are 89% if you talk about the total consumers of electricity in Pakistan. And these consumers, residential consumers, they consume about 48% of total electricity in Pakistan. Followed by industrial consumers. They consume about 25% of electricity, but they are the only 1% of consumers in Pakistan. And then you can see the ratios of commercial consumers and general services. The agriculture consumers, they are again 1% of total consumers, but they consume about 10% of consumption of electricity in Pakistan. Below here, you can see a map comparing Pakistan, India, China, and world average in terms of residential consumers and industrial consumers. You'll see here that in China, about 50% electricity is being consumed in industrial sector, but in Pakistan, the 50% is consumed in residential sector. So it is contrary to the world trend, contrary to the productive economy theoretics, that if you are producing electricity by consuming dollars, you should consume that electricity to bring more dollars in the country, which means that you are making, you are linking electricity sector with more productive sectors. So this is the basic equation where Pakistan needs to sort of set the tariff, use the price signals in such a way that we are promoting more productive economy so that we can plan for the longer term and plan for the macroeconomic prosperity in Pakistan. Let me just stop my video so that I get this more bandwidth. Okay, going next is, okay, these are some of the definitions of lifeline consumers, protected consumers, and non-protected consumers. In Pakistan, there is a category known as lifeline consumers. Lifeline consumers mean those residential consumers. Those are those having single phase electrical connection, and their sanction load is not more than 1 kilowatts. The lifeline consumers, they include residential non-time of use consumers having maximum of last 12 months and current month's consumption less than 100 units. So there are two rates for categories under in this category. One is less than 50 units and second is 100 units. And it will continue. And then comes the protected consumers. Protected consumers mean non-times of time of use residential consumers consuming about 200 units per month consistently for past 6 months. So this is a bit tricky here for protected consumers, because if for only 1 month, if you go beyond 200 units, your electricity bill will increase, and it will be increased for 6 months. And then consumers, those who are using more than 200 units, they are non-protected consumers in Pakistan. This is what
the tariff setting for residential consumers looks like, there are four distinct layers in this tariff setting. First is your generation. In generation, first thing comes the energy price, which includes fuel cost plus the variable operation and maintenance cost. In Pakistan, for fiscal year 25, 38% increased has been witnessed in energy generation cost. In terms of fuel cost, now it is 1.16 trillion as compared to 0.84 trillion, and that would constitute about 43% of the total tariff, and that is 10.94 rupee per unit if you sort of see it in average terms. And then comes the most important component in Pakistan right now. We have created a lot of hype around this, and this is the capacity price, and it includes fixed O&M, return on equity, debt servicing, insurance, cost of working capital, financing fees, procurement and construction, all these things in this, and these are indexed with foreign exchange reserve, foreign exchange rate, interest rate, inflation rate, and so on and so forth. So it constitute about 18.39 rupee per unit. Second component in this regard is G3 is fuel price adjustment, which is a bit tricky in Pakistan because every now and then you hear that NEPRA has increased price by 3 rupees, by 5 rupees. This is not true in a sense that whenever they increase electricity price in terms of fuel price adjustment, they mean that the previous fuel price adjustment has been rolled back and the new have been added, which means that if the previous month's FCA of our fuel price adjustment was 3 rupee, and after 2 months it has been decided that now the fuel price adjustment would be 4 rupee. So the net increase would be 4 minus 3, which means 1 rupee increase. But the media would portray it as electricity बिजली की prices जो हैं वो 4 रुपए बढ़ा दी गई हैं. So this is one thing that we need to keep in mind as well, and this is clearly reflected into the document as well. Fourth component is PHL, that is that is Pakistan Holding Limited surcharge, and this surcharge is the interest payments on circular debt, and it is also added to the tariff. It is about 3.23 rupee per unit. So if you add these up, G1, G2, G3, and G4, you get the generation cost of electricity in your bills. Then comes the transmission cost. It is about 1.54 rupee per unit. It also includes operation and maintenance charge as well. Then comes the distribution charges. Distribution component D1 comes from the generation cost. It is added as D1, and then comes the distribution charges, which include administrative cost, depreciation, base rate of return, etc., etc. It also contains distribution losses, quarterly tariff adjustments. This time around, it is about 3.68 rupee per unit, and then you add them D1, D2, D3, D4. This covers your electricity price component of the electricity bills. Then comes the government taxes. There are multiple taxes, general sales tax, electricity duty. It is levied by provincial government, and then other taxes, P1 plus P2 plus P3. So these all generation plus transmission plus distribution plus government charges, government taxes, they constitute about the total electricity price in Pakistan. These are this is one third coal plant. I just want to show you how these indicators, macroeconomic indicators, they are related to your electricity bills. So if you see, let me just on the pointer. Okay, if you see in 2019, this plant got the generation tariff, and at that time the capacity charges were 3.7 rupee per unit, and now in 2024 these charges have increased by to 18% from 3.7 rupee per unit to 11.8 rupee per unit, which means that you have indexed these
these capacity charges with multiple factors. For example, exchange rate. Exchange rate at that time was 97 rupee per unit, 97 rupee per dollar, and in 2024 it was 282.4 rupee per dollar. So in that regard, if you have 191% depreciation in your country, your tariff would also increase. So this is for thermal coal power plant, which we consider it as an indigenous reserve, but still it is linked with for foreign indicators, for example, exchange rate, US CPI, uh, global interest rate, LIBOR as well. So in that regard, it may not be indigenous reserve for Pakistan anymore. So what are different taxes in your bills? First is GST, general sales tax. It is levied by federal government. Currently, it is 18% for all consumers. Then comes the electricity duty. It is levied by provincial government. It is for 1.5% for residential consumers and 2% for commercial consumers, and it is levied on all consumers. Income tax. Well, in terms of income tax, if you are not filer, you are subject to 7.5% income tax on your bills for residential consumers if your bill is 25,000 and above. And if you are you are a filer and still income taxes being cut on your bill, you can sort of make this correction with your respective distribution companies. Then comes the extra tax, further tax, and retailer tax. These are all levied for commercial consumers, particularly for those who are not registered with FPR. So this is the tariff. Basically, you can clearly see that the tariff categories: lifeline consumers, protected consumers, unprotected consumers. It varies from 3.95 rupee per unit to as high as 42.72 rupee per unit variable charge. Uh, if you see it in terms of updated tariff or latest available tariff, it is as much as high as 48.84 rupee in terms of variable charges. So this is what we need to solve, and we need to create awareness about the tariff and how we can use these price signals in such a way that we promote more productive demand in Pakistan. So there is a vicious cycle of demand and tariff in Pakistan, obviously, because exponential increase in tariff has decreased the demand in terms of statistics. In June 2024, demand has decreased by 14% on a year-on-year basis. And then there is a relationship between tariff and theft as well. If you increase the tariff, it will increase the utility of electricity theft. So you need to see and understand this relationship that is known as Laffer curve. If you sort of keep on increasing tariff, it will increase the revenues for the government and distribution companies. But for a certain point in time, after that, if you increase your tariff, your revenues would start to decline because of increased theft and non-recovery of bills. Third most important thing is the uniform national tariff and regressive consumption. Uniform national tariff means that there is only one tariff. If you are a X-swapped or disco or K electric, you will have to follow one tariff that is being set by the government of Pakistan or NEPRA, and you need to follow that. So it penalizes electricity efficiency and promotes more inefficiencies in the system. Fourth thing is electricity bills usage as a tax revenue tool, which includes these income tax and general sales tax. So if the FBR is using electricity bill as a tool for I mean revenue collection, it will sort of decrease the utility of electricity for consumers. So we need to sort of look into that as well. Then again, uniform national tariff and distribution companies, there should be tariff set in such a way that
that sort of encourage more electricity efficiency and encourage more competition among distribution companies. So we need to sort of have these structural reforms in that regard as well. How we can reduce electricity bills or reduce these tariffs, maybe energy efficiency and conservation. Maybe we can remove 6 months criteria for promote protected consumers, but it should be it should have structurally adjusted in such a way that we provide more targeted subsidies than the blanket subsidies, and then competitive tariff and quality of service. If there is a competitive tariff in Pakistan among distribution companies, the quality of service would increase, and these distribution companies would compete with each other. And in terms of privatization, in terms of bringing more corporate principles into the equation. And then we need to sort of simplify slab mechanism as well. Maybe there should be only one electricity rate across the slabs, and those consumers who need protection or who need the subsidies, they should be provided subsidies through other mechanisms such as Benazir Income Support Program and other sort of schemes. In that way, we can simplify this slab mechanism as well. Another thing that we need to promote innovative financial solutions as well, maybe installment structure in bills that can be enhanced as well. And then we need to liberalize the market and build consumers' trust, uh, promote quality of services. This phenomena of electricity bills being used as tax revenue collection tool, it should be discouraged. And lastly, which is most important right now in Pakistan, how government needs to sort of use these price signals to cater for this net metering phenomena. Maybe one potential thing that can be done in this regard is that government may encourage consumers to increase their electricity consumption, particularly those who are using net metering. Maybe they can electrify their kitchens. Maybe they can use EVs, and so we can introduce sector coupling as well, so that more and more electricity or other fuels are discouraged, and more and more electrified we get, and we have this one fuel for everything sort of situation in Pakistan. So these were some of the things. Do read the report. It would be available online. It is very basic document in very simplistic sort of way, through which you can understand what are different component of electricity tariff, and how this electricity tariff setting mechanism works. So with this, thank you so much, everyone. Looking forward to this insightful discussion. I'm already seeing that Miss Afia has joined. Asad Saab has also joined. Sham has joined. So looking forward to it. Thank you so much. Back to you, Zainab. Well, thank you so much, Dr. Khalid, for such a detailed and insightful presentation. I think the components of tariff setting that you have explained can equip the consumers to, have to make informed decisions about energy consumption. It also provides some insights for the policymakers like Laffer curve and all. So thank you for this. And with this, I will start the discussion for move towards our panelists. I would request Ms. Afia Malik to share her perspective on complexity of this tariff setting process and what other insights you have on this topic. Over to you, ma'am. Thank you, Zainab. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, okay, thank you. I think given the current surge in tariffs, this is a very good contribution from STPI, in particular for the consumers who don't have the basic understanding of the tariff, about the slabs, about the one slab benefit. So, and it is also because of this lack of understanding, they are unable to control their bills. They don't know how the 1 unit more consumption of their electricity is going to almost double their electricity bills. So these basic things should be taught the consumers. They must understand this, and this study will definitely help understanding the consumers, how they can control their bills and how they can manage their electricity utility. And you're absolutely right that there is a weak link between price and demand.
And it is because of the weak link between price and demand that the energy consumption is more skewed towards more consumptive sectors instead of the productive sectors. And this cycle has to be broken, and it is possible only through the revision of our current tariff design. So the focus should be towards some innovative tariff design. And you're absolutely right that instead of cross-subsidizing and giving subsidy to the tariff, it should be based on a direct subsidy through the base for something like that. Some social action programs, the subsidy should be through those programs instead of a tariff. So tariff should be clear, simple, and based on the actual cost of service for each consumer category and each geographical market. And one more thing I like to add here is you're absolutely right that the demand has decreased last year. And one thing which also need to understand is demand is decreasing not because of theft or less recoveries or something like that. Because demand has decreased substantially because of the increased solarization in the or actually in all the sector, not only in the domestic sector. Those who can afford, they have now moved towards their own distributed generation system, and it has a substantial impact on the overall demand of the country. And due to the overall decrease in the demand, in overall decrease in the consumption, it has negative impact on the tariff. It has increased, basically, it has increased the tariff for the rest of the consumers. Because the capacity, we have excess capacity in the system, and when we are not utilizing this capacity, it negatively impact the overall tariff calculation. It increases the capacity payments, and in the end, it affects the consumer and tariff, and it burdens those consumers who are still on the grid, who are connected to the grid, and they are compliant consumers, and they're also not involved in any negative sort of feeling. They're not stealing, they have not tampered their meters, or they don't have 2 to 3 meters, something like this. That's all. And overall, I think it's a very good contribution from STPI, and it will help understand the basic tariff structure. It will be a good contribution from the STPI. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Afia, for your insights. And I believe that I strongly agree that to deal with this issue, we need an innovative tariff strategy. With this, I would now move towards our next speaker, that is Mr. Abu Bakr Ismail. Mr. Abu Bakr Ismail is the head of energy and sustainability at Amreli Steels Limited. Abu Bakr, sir, what's your views on this issue? How you think that this complexity can be resolved? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैरिफ काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बिल्कुल ऑब्वियसली, और बहुत ही टेक्निकल या बेसिक बातें तो आप लोग कर चुके हैं। तो मैं थोड़ी सी जो कुछ डिफरेंट जो मेरे व्यूज़ हैं वो ये कि आपके पास ये जो एक एफसी और क्वार्टरली का स्ट्रक्चर है, जो कि खालिद साहब ने बताया भी, डॉक्टर खालिद ने, कि इस पे हमें कुछ प्रोस्पेक्टिव टैरिफ के ऊपर काम करना चाहिए। बहुत एक चैलेंज मैं आपको इंडस्ट्री की तरफ से बताता हूँ कि इंडस्ट्री की तरफ से हमें एक चैलेंज ये आता है कि आप एक प्रोडक्ट जो है वो आप इस मंथ में, फॉर एग्जांपल, आप आज सितंबर क्लोज हो रहा है और आप सितंबर में उसे प्रोड्यूस करते हैं, और एक सर्टेन प्राइसेस आज आपको पता है उस पर आपने चार्ज कर ली हैं और आपने सेल आउट कर दिया आज की कॉस्ट बना के, और 3 मंथ्स के बाद ऑलमोस्ट आपको पता चलता है कि यार इसके ऊपर चार्ज क्या बढ़ेगा या क्या डिफरेंस आएगा, और कभी कभार वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जैसे लास्ट विंटर्स के अंदर आपके पास एफसी 8-9 रुपए के भी आए हैं, तो वो आपके पास पूरी कॉस्टिंग को एकदम डिस्टर्ब कर देता है प्रोडक्ट की, और मार्केट के लिहाज से आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कि यार आप प्रोस्पेक्टिव आगे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के अंदर इतने हाई अमाउंट्स डालें। तो मेरे ख्याल के अंदर इसके अंदर आपको कुछ ऐसा टैरिफ डिज़ाइन करना चाहिए कि जिसके अंदर आपके पास ये एफसीएस वगैरह जो हैं ये प्रोस्पेक्टिव उसके अंदर हों और वो बैलेंस हो रहे हों, और कस्टमर के लिए ये चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए। आज हम अगर बिल उठाते हैं, मैं सिर्फ बिल के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा, टैरिफ की डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि बिल के अंदर आपके पास इतने ज़्यादा हेड्स आ रहे हैं आपके बिल के अंदर कि आप उठाते हैं कि सबसे पहले तो
अगर मैं इंडस्ट्री के अभी घरों पे भी फिक्स चार्जेस आने लग गए हैं, तो फिक्स चार्जेस अलग आ रहे हैं, फिर वेरिएबल चार्जेस आ रहे हैं, फिर आपके पास क्वार्टरली आता है, फिर आपके पास फ्यूल एडजस्टमेंट आता है, फिर आपके पास सरचार्ज आता है। अगर मैं पार्टिकुलरली के इलेक्ट्रिक की बात करूं तो इस टाइम 2 तरह के सरचार्ज आते हैं अलग से, और फिर उसके बाद टैक्सेस का एक पूरा बहुत बड़ा खजाना है जो कि देना पड़ता है कंज्यूमर्स को। तो मतलब इतने ज्यादा हेड्स हैं, एक आम बंदा जो है, एक आम कॉमन मैन, उसके लिए तो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो समझ में नहीं आएगा कि यार ये 10 चीजें क्या आ रही है मेरे बिल के अंदर। तो हमें, मेरा ख्याल है कि आज जो एक जिसे नीड ऑफ द आवर कहते हैं, कि हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं कि यार ये अचीव कैसे होगा, इसको हम कम कैसे करें, मल्टीपल आपके पास डिस्कोज आनी चाहिए, या इस तरह की बातें हम करते आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसका हल या डिफरेंट किस्म की टैरिफ इंट्रोड्यूस होना ये तभी हो सकते हैं जब मार्केट में डिफरेंट प्लेयर्स आएंगे। जब तक मार्केट में डिफरेंट प्लेयर्स नहीं आएंगे और वो डिफरेंट अप्रोच से कस्टमर को नहीं देखेंगे, तो ये चीजें इसी तरह टिपिकल एक गवर्नमेंट सेक्टर में चलती रहेंगी, और उससे जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो ऑपरेट कर रहे हैं उनको कोई डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं हो रहा उसमें। तो टैरिफ एक आम बंदे को समझाना मेरा ख्याल है बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, और आपने इसके अंदर काफी अच्छा एफर्ट की है ये। और इस बुकलेट के थ्रू ऑब्वियसली कई लोगों के लिए आसानी होगी इसको समझने में। बट इसमें मेरा ख्याल है कि जो अगर हम recommendations पार्ट पे जाएं, तो हमें यकीनन ये recommendations पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचानी चाहिए कि इसको सिंप्लीफाई करें, इसके लोगों के लिए सिंप्लीफाई करें, इसको मुश्किल ना बनाएं। और सिंप्लीफाई करने के लिए नए लोगों को मौका दें, नए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को आने दें, होलसेल मार्केट को ओपन करें, ताकि चीजें जो हैं वो बेहतरी की तरफ आगे बढ़ सकें। बस ये मेरे थोड़ा सा पॉइंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अबू बकर साहब, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपसे कि इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, और थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इन द इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव एज वेल. So with this, I'll move towards our next speaker, that is Ehtisam Ahmed. Ehtisam is the Energy Finance Associate at Renewables First. Ehtisam, what's your perspective or point of view regarding this complexity of tariff setting in Pakistan? Welcome everyone, and thank you, Zanab. Thank you for giving me the opportunity to speak on this. Firstly, I would like to commend you on the excellent job with the guide that you've presented. बहुत ज़रूरी है to actually simplify the whole structure, the whole mechanism of tariff setting. जैसे खालिद साहब ने खुद भी कहा कि बहुत सारे लोग जो इस सेक्टर में काम करते हैं, इससे एसोसिएटेड है, शायद उनको भी इतना आइडिया नहीं है about how the whole mechanism works. जो major points थे that have mostly been covered. I have only a few things to add in terms of how the structure works and where the government actually needs to step in, because बहुत एक तरह से ये भी है कि कंज्यूमर अपने पैटर्न्स, डिमांड पैटर्न शिफ्ट हो जाएं, बहुत सारी चीजें उस पर भी डिबेट हो रही है, बट एक फंडामेंटल प्रॉब्लम इज ऑन द एंड ऑफ द गवर्नमेंट. जैसे बात की टेरिफ स्ट्रक्चर की, लाइक 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ टेरिफ constitutes of fixed cost capacity payments. अब उसमें से a large part of it is the debt servicing and the return on equity part. These are actually closely tied to your macroeconomics. आपके जो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स हैं, आपके लोकल इंटरेस्ट रेट्स हैं, आपका जो रिस्क है सेक्टर का, अब उनकी वजह से एंड जो प्रोग्रेसिवली पिछले 2-3 साल में ये ऊपर गए, because of that you have tariffs that are extremely high, like 60 रुपए तक भी जा रही हैं, which is extremely high for the Pakistani household, average household, because now you see that the tariffs, the electricity bills in some instances have crossed the monthly rental bill. So this is an exceptionally alarming situation. You would see as the macros stabilize, as the interest rates go down globally भी, पाकिस्तान में भी, कि ये थोड़ा बहुत इनका एक रिलीफ आ जाएगा. But the fundamental problem lies in the structure. अब what you have done is, एक तो आपने एक एंड पे तो मैक्रोस का इशू है, दूसरा अब for the immediate relief you're trying for debt reprofiling, कि आप उससे कुछ टेरिफ में रिलीफ दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में रिलीफ दे सके. बट वी हैव टू बी वेरी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि बहुत काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है.
जो मैं रिस्क की बात कर रहा हूँ, अगेन जब इन्वेस्टर्स इस मार्केट में आते हैं दे फिगर आउट द रिस्क ऑफ अ मार्केट. अब अगर गवर्नमेंट fails to uphold its contracts, its commitments, so it adds to the risk of the market, and then the investors, the lenders would add that premium to investing in the market, even if they consider investing. अब ये फर्क ऑफ हाउ दिस फीड्स इनटू टैरिफ आप देख लें कि जो भी के इलेक्ट्रिक को रीसेंट बिड में 3.1 सेंट का टैरिफ आया है. दिस and compare this to what the government auctions resulted in recently Muzaffargarh. So it clearly indicates that private sector players पे there is still like a considerable trust compared to the government. And what this indicates is towards the fact that probably it's high time कि हम और players को market में आने दें. जैसे अबू बकर ने कहा कि शायद मार्केट खोलें, अब एक होलसेल मार्केट की तरफ जाए और इस तरह के प्लेयर्स को आने दें ताकि वो इनका जनरेशन टैरिफ कम हो तो वो पास ऑन कर सकें वही बेनिफिट कंज्यूमर्स. लास्टली एक मैं थोड़ा सा अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से एक बात करना चाहूंगा कि आप अगर अपना कंजम्पशन देखें, समर में पीक कंजम्पशन है, विंटर में प्लाटू कर जाती है. अब द प्रॉब्लम विद दैट इज कि आपका जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू आ रहा है वो आप समर में एक तरह से पीक कर रहे हैं, विंटर में प्लाटू कर रहे हैं, लाइक इंस्टेबिलिटी है उस रेवेन्यू. एंड देन द बिल्स आल्सो रिफ्लेक्ट दैट. आप एक कंपोनेंट बिकॉज ऑफ द फैक्ट आपको 75% कॉस्ट थ्रू टैरिफ इज फिक्स्ड, but 95% and more than 95% of the revenue end, the consumer end, is variable. तो ये जो inherent mismatch है between the tariff and the revenue, ये भी you have to figure that out. एक fixed charge add करके you're trying to move towards that direction. You can always enhance that, be more progressive on that, और उससे आप ये mismatch करके uncertainty भी खत्म कर सकते हैं. Because again, the cash flows on the government end and as well as on the consumer end are, again, volatility does not help anyone. So मेरा सिर्फ इसमें थोड़े से ये points थे that we can obviously figure out the modalities of it through mutual consultations, but letting the volatility go away should be the first priority, so that the consumers and everyone, even the industry, could plan it better. Thank you, Ehtasam. Thank you for sharing the structural issues and thank you for sharing the ways that it could be addressed. Or with this, I would like to invite our next and last speaker for today's session, Sir Asad Mahmood Saab. Asad Mahmood is the energy efficiency and renewable energy expert. Asad Saab, what's your perspective on this tariff setting process or complexity of this issue? जी, अस्सलाम वालेकुम जी. It's a very good initiative जी on behalf of SDPI and आपकी टीम, और मुबारकबाद की मुस्तहिक है. और ये ऐसा एक टॉपिक है जिसको रिपीटेटिव डिस्कस होना चाहिए ताकि हरफ आम हो. टैरिफ सेटिंग का प्रोसेस और टैरिफ्स और यूनिट रेट्स के बारे में मालूमात जो है ना वो हर एक को जो है मिलनी चाहिए. और बात इस चीज़ से शुरू होती है कि बहुत से लोगों को आज की तारीख में भी एक यूनिट का अंदाज़ा नहीं कि एक यूनिट है क्या चीज़. इफ़ यू टॉक अबाउट डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, खास तौर पे सब्सिडाइज्ड और लाइफ लाइन, उनमें से तो आधों से ज़्यादा को पता ही नहीं होगा कि एक यूनिट का मतलब क्या है. और जब वो बिल देने जाते हैं तो फिर उनको अंदाज़ा होता है कि उनके रेट ये हो गया, यूनिट उनकी बढ़ गए. फिर इसी तरीके से मैंने इन दिनों में ये भी देखा कि बहुत सी जगहों पे सिंगल फेस कंज्यूमर्स जिन पे TOU अप्लाई नहीं भी होता, वो भी अपने घरों के लोड्स या उस तरह मैनेज कर रहे हैं जिससे उनके ऊपर जो है पीक एंड ऑफ पीक रेट्स सेटल होने हैं. फिर कुछ ऐसी भी सूरत हाल देखने में मिली कि जिस तरह अभी पिछले दिनों अनाउंस हुआ हुकूमत पंजाब की जानिब से टैरिफ सेटलमेंट्स, जिसमें सब्सिडी दी जानी थी कि अगर आपके पिछले महीने के बिल दे दिए तो अगले महीने में एरियर्स आ जाएंगे. लेकिन इस तरह भी देखने में आया कि जिन्होंने पेमेंट्स कर दी उनके टैरिफ्स के अंदर जो है वो एडजस्टमेंट नहीं हुई. सो द पॉइंट इज कि अनसर्टेनिटीज, वेरिएबल्स डेफिनेटली डू एग्जिस्ट, बट ये है कि हुकूमत या डिफरेंट जो कम्युनिकेशन टूल्स हैं,
किस तरीके से लोगों को आगाह किया जाता है कि वो एक बुनियादी रेट को समझ सकें, अपने खर्चों को, अपने कॉस्ट्स को मैनेज कर सकें। कुछ चीज़ें जनरेशन मतलब आम आवाम को सामने रखते हुए हुकूमत की हिकमत अमली इस नोयत की ही होनी चाहिए कि कम से कम टैरिफ जो है, या एटलीस्ट एक्चुअल टैरिफ भी अगर आता है तो या से शुरू से सब्सिडी की आदत ना डाली होती तो मामला ठीक चलते। लेकिन चूंकि सब्सिडाइज्ड एनर्जी के साथ टैरिफ्स के साथ चलते रहे हैं, तो वो चीज़ें हिकमत अमली जो है वो लोगों को परेशान करती है कि जब एकदम से कॉस्ट टैरिफ सब्सिडीज हटाई जा रही हैं। तो हमने इन चीज़ों को मलहूज़े खाते रखना है फ्यूचर प्लानिंग में। और कुछ और ऐसे मामलात हैं जिस तरीके से 132 केवी ग्रिड्स के साथ जिनके अपने स्टेशन हैं, या फॉर एग्जांपल MES या बाकी सोसाइटीज़ हैं जो अपने टैरिफ से अपने रेट्स चार्ज कर रहे होते हैं, तो उनके लिए टोटली एक जो टैरिफ वाली दुनिया है वो अलग मायने रखती है। सो द पॉइंट इज़ के इसको मतलब इसके जब आप आगे फर्दर रिफाइन करते हैं वर्जन्स को, और एज इट इज़ इन ए वेरी गुड शेप। और आगे जब आप इसको लेके चलेंगे तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर मुलूज़े खाते रखिएगा कि हम किस तरीके से जो है चीज़ों को फर्दर जो मतलब इसमें एम्बिट में लेकर आ सकते हैं। और ख़ास तौर पे न्यू डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आ रही हैं बीच में जिस तरीके से, और जिस तरह खालिद साहब ने आजकल कर्व्स का काफ़ी जिक्र हो रहा होता है, डक कर्व होगी, जो है आपकी कीलिंग कर्व आ गई, एंड सिमिलरली जो डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था लॉफर कर्व का। सो ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो कीमत ख़रीद को सामने रखते हुए आम बंदे की यूनिट रेट सेटल करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये सारी चीज़ें आम आवाम पाकिस्तान की उसको एनर्जी पॉवर्टी की जो है उसके ऊपर तलाक होने लग जाएगा, बल्कि हो चुका है बहुत से लोगों पे। सो एक ख़ास तबका जो मीडियम इनकम हाउस होल्ड ऑनर कैटेगरी में भी आता है, तो दिस इज समथिंग, एनर्जी पॉवर्टी की डायमेंशन को भी अंदर एडअप ज़रूर एक सर्वे की शक्ल में अगर फ्यूचर आपकी कोई एक्टिविटी इसके ऊपर होती है तो एक सैम्पल साइज या एक सर्वे की बेसिस पे एनर्जी पॉवर्टी ग्राफ या उसका भी एक एनालिसिस डिस्को वाइज देखा जा सकता है। सो अगेन ये लॉफर कर्व की वजह से ये भी चीज़ देखने में आई कि एक बंदे ने मीटर लगाया हुआ है, वर्कड ऑन सम अडेप्टेशन प्लान्स इन सिंध। सो फ्लड के बाद एक मीटर अगर एक के पास है तो 5-6 खानदान के लोग आसपास जो घरों में उन्होंने मीटर नहीं लगाया क्योंकि उसकी प्राइस वॉज वेरी मच हाई, जो इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट और बाकी जो आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो एक ही मीटर से आसपास तारें जाती हैं घरों में, और एवरी वन यूज टू पे टू द सेम like person having the connection to the grid. So the point is कि टैरिफ अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी तबके के लिए जिनको अली पे नहीं पता, उनको भी हमें बुनियादी नुक्ते बताने हैं कि भाई आपको ऑलरेडी हुकूमत की जानिब से छूट दी जा रही है, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि उनको कोई छूट नहीं मिल रही। तो उनको ये बताना भी ज़रूरी है कि उनको छूट मिलती है। आम बंदा पाकिस्तान में इतनी बिजली के यूनिट पे कर रहा है और आप लोगों को इतनी छूट दी जा रही है, क्योंकि बहुत से अच्छा काम अगर हुकूमत ने किया भी होता है तो वो उनकी नज़र में सामने नहीं आ रहा होता। तो ये भी हम आपका ये जो स्टडी है ये इस पे भी फोकस कर रही है, और होपफुली लाइक we can have further detailed discussion in the subsequent sessions. Thank you so much, Asad Saab. Your suggestions are very well noted. और जो ये हमारा डॉक्यूमेंट है ये अपडेट होता रहेगा विद टाइम, ताकि जो भी न्यू चैलेंजेस हैं और जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करते रहें, तो वो इस डॉक्यूमेंट में हम लोग फर्दर करते रहेंगे। I think we have had a very wonderful discussion, very insightful discussion, and heard from all perspectives from our experts from academia and industry. With this, I will move towards the concluding remarks. For concluding remarks, I will invite Ahad Nazir Saab to share concluding remarks and thank you note for our panelists. Thank you very much, Zainab. I think this was a very insightful discussion. आई होप के टीम ने अच्छे पॉइंटर्स नोट कर लिए होंगे। जैसा मैंने स्टार्ट पे बताया था कि दिस इज़ अ डायनामिक डॉक्यूमेंट एंड वी विल कीप ऑन अपडेटिंग इट। दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट एडिशन, और सिर्फ हमारा जो बेसिक इसके पीछे एम था, जो इम्पैक्ट था, दैट वाज वी वर ट्राइंग टू हाईलाइट दैट
और ऑफ कोर्स आप लोगों की कुछ फीडबैक आया, उसकी बेस पे वी विल बी रेगुलरली अपडेटिंग इट। दूसरा काम जो मुझे लगता है कि आई थिंक वो शायद एहतसाम साहब और हमारे लिए होमवर्क है, वो ये है कि आई थिंक कि जो ओवरऑल हमारा एक एक फुल इलेक्ट्रिसिटी वैल्यू चेन मॉडल है, आई थिंक उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों को एक एडिशनल वेरिएबल्स के तौर पे ट्रीट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सोलर पीवी, जो रूफटॉप पीवी हैं हमारे, फॉर एग्जांपल आई स्टिल बिलीव के दे आर न्यू आईपीपीज दैट वी आर क्रिएटिंग। सो इस तरह के जो आई थिंक रिसर्च क्वेश्चंस हैं, दीज आर समथिंग दैट वी रियली नीड टू वर्क ऑन। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली कोई एथिकल प्रैक्टिसेस यूज़ करेगा या सही तरीके से चलेगा, तो वो हमेशा आई थिंक गलत असम्पशन होती है। वी हैव टू क्रिएट इंसेंटिव टू डू गुड। अनफॉर्चुनेटली हमारा इंसेंटिव स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन होता है कि शायद लेस इम्पैक्टफुल काम करने में आपको इंसेंटिव ज़्यादा होता है, और जो जो एक्चुअल लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल काम होते हैं उनका इम्पैक्ट कम होता है। सो आई थिंक कि रेगुलेशन डिज़ाइन जो है उसके अंदर इन चीज़ों को, जो इम्पैक्ट असेसमेंट है उसके बाद, आई थिंक दिस शुड बी कंसिडर्ड। सो अगर मैं थोड़ा सा समराइज करूं तो आई थिंक आज की डिस्कशन के कुछ जो मेजर पॉइंटर्स हैं उनमें आई थिंक वी डिस्कस्ड के जो लोड है हमारा, उसका एक बहुत बड़ा चंक है जो कि डोमेस्टिक कंजम्पशन में जा रहा है, विच इज़ अनप्रोडक्टिव। एंड बट आई वाज रिसेंटली इन चाइना, और वहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया के काफ़ी लोग आए हुए थे, एंड आई वाज सरप्राइज टू नो कि दिस इज़ द केस विद ऑल सिमिलर कंट्रीज। सो आई थिंक कि अब इसकी रीजंस क्या हैं, कुछ लोग शायद कहेंगे कि दिस इज़ बिकॉज वी यूज़ एनर्जी एज अ पॉलिटिकल टूल। सो उसके अंदर शायद हमने जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया क्योंकि उसकी बेस पे वोट मिलता है शायद। बट आई थिंक के दिस नीड्स टू बी स्टडीड एंड इम्प्रूव्ड। किस तरह हम अपनी इंडस्ट्रियल बेस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और किस तरह हम ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर यूजिंग द ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी फॉर द इंडस्ट्रीज इज बिकमिंग इंसेंटिवाइज्ड रादर देन them using their own captive arrangements. इसी तरह आई थिंक दूसरा जो मेजर पॉइंटर था दैट वाज रिगार्डिंग कि ओवरऑल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है टैरिफ सेटिंग के लिए। आई थिंक दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द कंज्यूमर्स, बट इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि पावर सेक्टर में जिन्होंने हमसे ज़्यादा काम किया हुआ है, बट दे स्टिल फेल टू अंडरस्टैंड द वे द टैरिफ इज स्ट्रक्चर्ड। सो आई थिंक इसको इसको थोड़ा सा डीमिस्टिफाई करना वो हम सब की एज एज रिसर्चर्स, एज पार्ट ऑफ दिस एनर्जी सेक्टर, आई थिंक हम सब की जिम्मेदारी है, और उसके अंदर पहला स्टेप हमने लिया है। बट प्लीज फील फ्री टू सेंड अस एनीथिंग थ्रू ईमेल, और वी विल कीप ऑन इम्प्रूविंग इट। आई थिंक इसी तरह सीटीबीसीएम के बारे में, ऑल्दो इट इज़ probably the best model, but again I think we take so much time to implement such things that it eventually वो जो है वो हम भूल जाते हैं कि हमने वो स्टार्ट क्यों किया था। सो गोल सेटिंग जो है वो बीच में रह जाती है। बट आई थिंक उसमें मैं रिन्यूएबल्स फर्स्ट का स्पेशली जिक्र करूंगा कि इन लोगों की जो सीटीबीसीएम बुकलेट है दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एंड आई थिंक उसी तरह के एफर्ट जिस तरह हमने टैरिफ के हवाले से किया, इन्होंने सीटीबीसीएम के हवाले से किया, उसके ऊपर भी हम फीडबैक जारी रखें, एंड आई थिंक वी नीड टू पार्टनर ऑन दैट एज वेल। इसके अलावा आई थिंक जो कंज्यूमर डिमांड जो है उसके अंदर, अब फॉर एग्जांपल इफ वी रियली वांट टू फोकस ऑन क्रिएटिंग creating awareness for good practices in the form of renewable energy uptake या ईवीज का फॉर एग्जांपल हम करना चाह रहे हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट का एक तो रोल रेगुलेशन वाली साइड पे है, बट आई थिंक डिमांड साइड पे भी उनका रोल है, because government is basically creating a lot of demand as well. So for example, if government buildings first convert to RE,
और तो ऑटोमेटिकली आई थिंक वो जो क्रिटिकल मैस है वो कवर हो जाएगा। यही हमने ईवी के ऊपर भी हमारी मेन रिकमेंडेशन यही है कि अगर गवर्नमेंट अपना फ्लीट ईवी पे कन्वर्ट कर देती है तो ऑटोमेटिकली आई थिंक तो जो बेसिक क्रिटिकल मैस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवीज और चार्जिंग स्टेशन के लिए जो एक आपको बेसिक मैस चाहिए वो आपका क्रिएट हो जाएगा, एंड देन इट विल लीड टू अदर पीपल ज्वाइनिंग इन एज वेल, क्योंकि उसकी प्राइस फिर कंपेटेबल हो जाएगी। अभी अगर मैं ईवी पे जाना चाहता हूँ तो मेरी fossil fuel car is much cheaper as a capital investment than EVs. Uh, Similarly, I think again we all need to contextualize every reform agenda with the needs of the day. For instance, अगर आजकल की हम बात करें तो every reform agenda it actually has to lead to economic growth, investment, एक्सपोर्ट्स। जब तक हम उसके साथ लिंकेज नहीं क्रिएट करेंगे तो पॉलिसी मेकर का इंटरेस्ट नहीं होगा। सो इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी अगर आप लोगों ने देखा हो तो 2-3 जगहों पे हमने यही कोशिश की है कि वी हैव ट्राइड टू क्रिएट अ लिंकेज डायरेक्टली, कि जो भी रिकमेंडेशंस हम दे रहे हैं वो दे हैव टू समहाउ रिटर्न actually the outcome of those, the consequence of those recommendations will eventually be economic growth in some form, because this time पे जो pain points हैं they are power sector reforms, investment and exports. So I think ये this is for all of us that we need to really focus on that. एंड अगेन जहाँ से आई थिंक हमने स्टार्ट किया था, आई थिंक एवरीबडी एग्रीज ऑन दैट कि हमारा मेन मकसद इसके पीछे यही है कि जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, सो एवरी कम्युनिकेशन दैट कम्स आउट ऑफ दैट रेगुलेटर हैज टू बी एक्चुअली in a non-technical language which eventually resonates with the common consumer that they have. So with this, I'd like to hand back to Zainab, and thank you again. Thank you everyone for joining, and we will keep you updated on the updates on this publication and others as well. Thank you. Thank you to all the panelists and participants. Our document is uploaded on our website. Please do visit that and share your feedback with us. And thank you so much. If you have any questions, you can write down on the LinkedIn post as well. So thank you so much for joining and have a great day. Allah Hafiz. Allah Hafiz.